Good evening and welcome to Breaking Views on NDTV. I am Ankit Tyagi. Ladies and gentlemen, a horrific incident where skeletal remains, burnt skeletal remains of two people were found in Haryana. And since then, there has been allegations on one man. The family alleges that Monu Manesar, a self-styled Gorakshak, cow vigilante, is responsible for these murders. It's been more than a week. Where is Monu Manesar is the question that we are asking. Before we go on to our top focus, let's very quickly turn our attention to this breaking news which is coming in at this moment on the broadcast. In fact, news coming in at this moment that Rajya Sabha Chairman, the Vice President, Mr. Dhankar, has referred the names of 12 opposition MPs to Committee of Privileges of Rajya Sabha for examination, investigation and submission of a report on alleged breach of privileges arising out of disorderly conduct during the budget session. MPs against whom the proceedings have been initiated are Sanjay Singh of the Aam Aadmi Party, Shakti Singh Gohil of the Congress Party, Sushil Gupta of the Aam Aadmi Party, Sanjay Pathak of the Aam Aadmi Party, Mr. Rathwa of Congress, Syed Nasir Hussain of Congress, Kumar Ketkar of Congress, Imran Pratapgarhi of Congress, DL Hanumantaya of Congress, Fulo Devi Netam Congress, JB Mathur Hisham of Congress and Ranjit Ranjan. 12 opposition MPs have been accused. I just want to very quickly, in fact, we are now being joined by Mr. Sanjay Singh, Rajya Sabha MP of the Aam Aadmi Party. He was one of the leaders of this protest. I just want to, in fact, play out. Just, Sanjay Singh ji, एक second अगर आप मुझे दें. For 5 seconds, I just want to play out the nat of what had happened when the Prime Minister was speaking and the protest which was taking place by the opposition. Let's just listen in and then we are going to go to Mr. Sanjay Singh. शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो. So, could you hear when the Prime Minister was speaking, there were slogans being raised, a demand of JPC being raised, and one very prominent voice in that was Mr. Sanjay Singh. Sanjay Singh जी, आपके खिलाफ अब जो प्रिविलेज कमेटी है, वो अपनी तरफ से एक्शन शुरू करेगी, एग्जामिनेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा. कहा जा रहा है कि आपने जानबूझकर आप सदन के वेल में गए, आपने स्लोगन्स बार-बार राज्यसभा के चेयरमैन के मना करने के बावजूद स्लोगन्स आपने बोले, आपने प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया है. देखिए, पहली बात तो अंकित जी, मैंने 7 दिन तक लगातार नोटिस दिया 267 का कि भाई एक महा घोटाला हुआ है जिसमें मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के, कैरिबियाई कंट्रीज में फर्जी कंपनियां बना के अडानी की कंपनी में हजारों करोड़ रुपए लगाया गया है. इस घोटाले की जांच होनी चाहिए. इसको लेकर बार बार जेपीसी की मांग की हमने और 7 दिनों तक लगातार 267 का नोटिस दिया कि इस पर चर्चा कराई जाए. तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ये तो मेरे विशेषाधिकारों का हनन है कि मैं सदन में जनता से जुड़े हुए एक बड़े मुद्दे को उठाना चाहता था और मुझे उठाने नहीं दिया गया. उल्टा मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात की जा रही है. तो नोटिस आने दीजिए, उसका जवाब देंगे और संजय जी, मुझे कहना है वो कमेटी के सामने कहेंगे. लेकिन जहां तक मेरा अपना मत है, मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैंने कोई भी विशेषाधिकार का हनन नहीं किया, कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं किया. तो इसका जवाब कमेटी के जब नोटिस आएगी तो हम देंगे. मतलब अगर मैं पूछूं, आप यू डोंट रिग्रेट जो उस दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे और आप लोग नारे लगा रहे थे, आपको उसका पछतावा नहीं है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे तब थोड़ी शांति बनाए रखनी चाहिए थी, एक पद की गरिमा होती है? प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं और अगर इस देश के करोड़ों लोगों के मन में जिनका पैसा LIC में, SBI में लगा है, जिनका पैसा डूब रहा है, लाखों करोड़ रुपए मार्केट से डूब गया जनता का, अगर उनको प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो नारा लगाना लोकतंत्र में मेरा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है. मैंने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया. एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे मैंने अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की. ये मेरा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैंने उसका प्रयोग किया. इसमें गलत क्या है? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? आपको लगता है कि आपको सस्पेंड किया जा सकता है? ऐसा पहले भी हुआ है? नहीं, देखिए, इसका जो तरीका है वो अभी तो कमेटी की ओर से मुझे कोई नोटिस आएगा या मुझे कभी बुलाया जाएगा
कमेटी बुलाती है नहीं बुलाती है उनका अपना अधिकार है, जब बुलाएंगे तब उस समय देखेंगे, वहां जाके अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह, वन ऑफ द 12 MPs of opposition who has been named as far as this breach of privilege, alleged breach of privilege is concerned, and if in fact this is proved by the privilege committee, the Rajya Sabha chairman has the power to suspend these MPs for some time or from entire session. That's it's again going to be a flashpoint between the treasury benches and the opposition, as we have seen before. Let's now shift focus to our main story that we are tracking at this moment on Breaking Views. Where is Monu Manesar, the main accused, ladies and gentlemen, in the death of Nasir and Junaid? Two men, those who left their house in Rajasthan in their own car for some urgent family business. Both of them were allegedly kidnapped and then killed in the most horrific, brutal fashion by cow vigilantes. They're still at large, many of them. The family said not only were they beaten, but they were burnt with that Bolero car, burnt alive. The visuals are on your screens. The family names Monu Manesar as one of the key accused in this case. Police sources say Nasir and Junaid, who were found charred to death in Haryana last week, were first taken to a police station in Haryana's Firozpur, Jhirka, while they were still alive, though badly beaten. Haryana police did not want this on their head. And this then raises questions on the way Haryana police functions, and are they actively trying to help and make sure that this man remains out of the purview of the law. The Haryana police say that they launched a probe now on the police officials who turned these victims away, turned them away to their death, did not take them to a hospital, and let the accused walk away with them. While one of the accused has been arrested by the Rajasthan police, 4 are still missing, untraceable, not to be found, including prominent cow vigilante Monu Manesar, who is still on the run, ladies and gentlemen. Who is Monu Manesar? Let me first tell you a little bit about that. Let's just go across, in fact, and tell you who this man Monu Manesar is. In fact, just let me give you a quick history of this man. He's a 28-year-old whose real name is Mohit Yadav. This man, Monu Manesar, 28-year-old. In 2016, ladies and gentlemen, he started a network against alleged cow smugglers in 2016. He said that he and his team helps the police to try and nab cow smugglers. So he gives information to the police, and then, of course, it's the police job. That's what they claim. This man also, let me just now move forward and tell you about Monu Manesar. He's alleged, in the last 20 days, there are 3 serious allegations which have been made against him. 28 January 2013, a man named Waris died in a collision between a truck and a car. The family said that Monu Manesar was behind this killing. The police then later said it was an accident, and they also released a CCTV footage to prove their claim. It was in Haryana, the new police. Later, in fact, let's now go to the next incident right now. This man is also accused of firing. On 7th Feb, Monu Manesar is accused of opening fire in Patodi village in Haryana. It was because an inter-religion marriage was taking place, and Mr. Monu Manesar, he did not like it. He opened fire on the family of one of the parties. 16th Feb, Monu Manesar is accused in this Bhiwani horror where 2 people have been killed. Let me tell you more about this very man, the Monu Manesar. Not only is Monu Manesar absconding right now, ladies and gentlemen, but Monu Manesar is at this moment making videos. He is putting them on Twitter. His videos are going viral. On YouTube, on Twitter, there are so many people, those who are watching and enjoying his videos. Let me just show you the last video that he played. It was a video in a car where guns are placed on the bonnet of that car or on the dashboard of that car. And Mr. Manesar in this video is driving, laughing, making a video, getting, a lot of people to support him. Did the police check all these guns? Whether there is license? How can a man
be so blatant until and unless he's getting some patronage? That's the question. Mr. D.P. Kaushik, spokesperson of the BJP Haryana, is with us this evening. We are also being joined by Dr. Vikram Singh, former DGP Uttar Pradesh. We are also being joined by Jagmati Sangwan, activist, hails from Haryana. Welcome to all three of you, and thank you for joining us at this moment. I want to start, in fact, with you, Mr. Kaushik. Sir, where is Monu Manesar? देखिए सर, पुलिस को देखना है वेयर इज मोनू। हमारे यहाँ पे कोई भी कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, सरकार उसको बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है सर। ऑलरेडी ऑर्डर दिए हुए हैं, हम राजस्थान पुलिस के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं, अपनी पुलिस के साथ भी कर रहे हैं। कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, कितना ही बड़ा कहीं पे भी हो, सरकार अगर किसी ने क्राइम किया है उसको नहीं बख्शेगी। ये पुलिस को देखना है, उसको सर्च करना है कहाँ है कहाँ नहीं, पुलिस का काम है सर। हमारे सरकार को ऑर्डर दिए, तब भी जिस घटना घटी थी उसी टाइम में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने ऑर्डर जारी कर दिए कि किसी को भी किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा पावरफुल हो, कितना ही कहीं पे भी घुसा हो। सरकार सर, मैं गिनती अगर करनी शुरू करूं तो शायद मेरे जो हाथों पे उंगलियों पे जैसे गिनती करते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। जितने बीजेपी के नेताओं के साथ मोनू मानेसर की फोटो उसने अपने ट्विटर पे और हर जगह पर डाली हुई है, इतने सारे उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इतने आरोपों के बावजूद भी वो आदमी आराम से घूमता है, ट्विटर पे वीडियो बनाता है, फेसबुक पे वीडियो बनाता है, और आप कह रहे हैं कि प्रशासन का खौफ है, पुलिस का खौफ है हरियाणा में। पुलिस करेगी ना, अगर उसने क्राइम किया तो पुलिस पकड़ेगी उसको। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों के किसी शरण में है वो। मैंने आपको बताया ना, अगर फोटो सर 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं इस व्यक्ति के ऊपर। फोटो देखिए, फोटो एक मैटर नहीं है सर। फोटो वो आदमी पहले किस रूप में आता है किसको क्या पता होता है, राजनीति हर आदमी करता है। 1 दर्जन से ऊपर केस हैं इस व्यक्ति के ऊपर जी। 1 दर्जन से ऊपर केस हैं इस व्यक्ति के ऊपर हरियाणा में। पुलिस काम कर रही होगी, अपना कानून काम कर रहा है सर, उसके ऊपर केस दर्ज है तो कानून अगर शायद काम करता। डॉक्टर विक्रम सिंह, इफ द कानून एंड द पुलिस वुड हैव बीन वर्किंग द वे दे आर सपोज्ड टू, डू यू थिंक अ मैन लाइक मोनू मानेसर पुटिंग these videos of multiple weapons on his dashboard, not 1, not 2, not 3, but 5 guns on his dashboard, making it sound like so glamorous, making it sound, the self-style vigilante says that he only gives information to police. And this is not the first case in which he has been accused, sir, of killing people, specifically from a particular community. There have been more than 12 cases against this man. You think that the police of Haryana is doing justice in this case, sir? Mr. Ankit Tyagi, Monu Manesar is a serial offender accused of at least a dozen crimes. And the manner in which he is posting his videos on Twitter and other social media platforms goes to show and indicating of the fact that those in politics and those in uniform who were expected to maintain a respectable distance from such criminals did not do so and allowed and gave him a long rope. And the consequence is this brazen display of bravado and the shameless display of firearms. If they are illegal, well, he should be behind bars under National Security Act. If they are licensed, as I'm sure they are not licensed, then again he should be taken to task, because this is an illegal and illegitimate display of firearms, which there is absolutely no reason and there is no explanation. Monu Manesar is emboldened by the patronage and the protection provided by those in uniform, police officers, and also the politicians. Absolutely. And to say that the police will do its job, it has not done till now, and I don't have any hopes that the orders will be complied, because these are lukewarm, half-hearted instructions, and Monu Manesar, lo and behold, will surrender before a court and will not be arrested. Absolutely. And this man, and Dr. Vikram Singh knows this much better. He's putting out Facebook videos, posts on Twitter. There is electronic surveillance. If the police wants, he can be arrested. Jagmati Sangwan, I just want to understand from you, ma'am, is there some sort of a tacit understanding or at least a tacit approval of these kind of vigilantes who go by the name of, Gaur Rakshaks? Is this their job? They keep posting these videos on which they are chasing, vehicles. Whether legal or illegal, that is the job of the police. Has the Haryana police outsourced their job to such vigilantes, ma'am? Yes, definitely there is a tacit understanding, and not only the protection from the side of government, they are being encouraged every day by this government. And Mr. D.P. Kaushik, who was saying that police is doing its work. No, the police is not doing its work. If the police was working,
according to the law, the two young people would have been alive today, and their lives could have been very well saved by the Firozpur Jhirka police. That's right. They brought the two young men in that gadi, and the policemen, they did not arrested these Monu Manesar, whosoever these cow vigilantes are, and they did not protected the life of these two people. And every day there are incidents where these people are playing with the life of innocent people. Why people would not bring cows? They are farmers. Their family depends on the economy of the Right. cattle. And how can they survive without this? DP Kaushik Saab, it isn't, don't you think it's embarrassing, it's shameful what is happening in Haryana? The allegations which have been made on the Haryana police. बताया जा रहा है कि इन लोगों को अदमई हालत में लेकर एक पुलिस थाने के अंदर लेके गए थे ये लोग. उससे आपको यह भी पता चलता है कि इनके किस तरीके के पुलिस से कनेक्शन है. और अब लीपा पोती चल रही है सर कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पकड़ लेंगे, वी आर सपोर्टिंग द राजस्थान पुलिस. क्या हरियाणा पुलिस का काम आउटसोर्स कर दिया गया इन लोगों को? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने कहा आपको हरियाणा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको विद इन 1 or 2 days आपके सामने होगा. मैंने कहा नहीं बख्शेगी पुलिस सर. लेकिन ये जो गौरक्षक है मोनू मानेसर जैसे, कौशिक साहब जो गौरक्षक है मोनू मानेसर जैसे, ये कैसे उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, ये मेरा वादा है. ठीक है, तो वो कितना ही बड़ा इंसान, कितना ही बड़ा अपराधी हो, ये बात आप लगातार कह रहे हैं. लेकिन कम से कम हरियाणा पुलिस के और सरकार के जिस तरह से रवैया है उससे ऐसा लगता नहीं. मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये मोनू मानेसर जैसे गौरक्षक जो हैं, जो रोज फोटो डालते हैं कि ये ट्रक को पकड़ लिया, उस ट्रक को पकड़ लिया, वो चाहे लीगल हो या इलीगल, वो तो पुलिस का काम है ना सर. तो इन लोगों को कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है? इनको कैसे इतनी आसानी से ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं? पुलिस इनको क्यों नहीं पकड़ रही है? नहीं देखिए सर, अगर कोई इंटीमेशन देता है किसी को गलत, अगर गाड़ियां जा रही हैं तो अगर कोई बता रहा है उसको, तो मुझे लगता है अच्छी बात है. लेकिन उस पर अगर कोई गलत कार्रवाई करते हैं या मारा पीटी करते हैं तो पुलिस का काम है, पुलिस उसको करेगी. कौशिक साहब, अगर हमारे यहाँ से गोरक्षक जो है, कौशिक साहब, कौन आपकी बात इतनी सादगी से, इतने भोले तरीके से आप कह रहे हैं? रोज वीडियो डालते हैं कि ये लोग किसी गाड़ी के ऊपर चलते हुए फायरिंग कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, ड्राइवर को पकड़ के पीट रहे हैं, और पुलिस ने अब तक ये आदमी उसके बाद भी बाहर है. डॉक्टर सिंह 4600 मुकदमे टिल ईयर अभी तक दर्ज कर चुकी है हरियाणा सरकार. किसी को नहीं बख्शेंगे हम लोग सर मुकदमे. किसी डॉक्टर सिंह, इज दैट इनफ? डॉक्टर सिंह, इज जस्ट registering cases enough? Is that how the police functions, sir, where vigilante groups can in fact decide who do they think is legal, who is engaging in illegal business? They are the ones who will go and chase them, fire at them, and after they are done beating them black and blue and sometimes even murdering them, they will call the Haryana police and say it's a tip-off. Mr. Tyagi, it will be simplistic to believe that registration of 46,000 cases is enough and a sufficient deterrent. To the contrary, this is the first step towards deterrence, effective investigation, effective prosecution and conviction. That has not happened. And since that has not happened, mere registration of a case, even if it is 46,000 or 46 lakhs, does not cut any ice anywhere, and it will have no impact. To the contrary, the police jolly well know that by electronic surveillance, as you had mentioned in your opening remarks, if there was a will, he could have been nabbed in no time, because these are e-footprints. These e-footprints lead to the exact location of the culprits, whoever is posting them. I fail to understand why the arrests have not happened. कौशिक जी, मेरी बात आप ना माने. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसकी आड़ में जो और अपराध किसको हमदर्दी होगी ऐसे लोगों को? कौशिक जी, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था. कौशिक साहब थोड़ा सा संयम बनाइए सर, उनकी बात सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा. केवल आखिरी वाक्य कौशिक जी, हमारी बात आप बिल्कुल न सुने, सांगवान जी की बात बिल्कुल न सुने. माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था 2018 में कि ये असामाजिक तत्व हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए और प्रभावी कार्रवाई. अरे मेरी न सुने, प्रधानमंत्री जी की तो हम सुन ले कि उनकी भी हमने गांठ बांध ली कि हमको किसी की नहीं सुननी है, प्रधानमंत्री जी की भी नहीं सुननी है. अरे कम से कम अच्छा बुरा देख लें और जो कानून की चीज है उसके ऊपर कार्रवाई करें. आपका यूपी का एग्जांपल आपके सामने सर, हरियाणा का एग्जांपल आपके सामने.
कितने मकान ढा दिए हमने, कितनी प्रॉपर्टी सील कर चुके हम क्रिमिनल की। हम नहीं बख्शेंगे हरियाणा प्रदेश के एक भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे। सर क्रिमिनल्स में क्या कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल्स में भी जो कार्रवाई है वो उनका धर्म और राजनीति देख के कर रहे हैं क्या? क्योंकि मोनू मानेसर के घर पे कभी तक आप पहुंचे नहीं। सर कोई राजनीति नहीं है, मैं कह रहा हूं किसी को हमदर्दी नहीं होगी ऐसे लोगों से। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आप हरियाणा का जो सरकार का घर सील करने का या घर तोड़ने का, सैद्धांतिक रूप से मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बातें कही हैं, लेकिन क्या मोनू मानेसर के घर पे पहुंचा है आप लोगों का बुलडोजर अभी या सील कर दिया है क्या उसका घर? हाँ, मोनू मानेसर का घर तो वहीं पे है सर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पूरी सजा देगी अगर वो क्रिमिनल डिसाइड होता है। आई एम सॉरी सर, एंड दैट इज व्हाई आई हैड अ वेरी सीनियर रिस्पेक्टेबल फॉर्मर ऑफिसर on the show because he calls spade a spade and he has told you that what the Haryana police is doing in Hindi it's called लीपा पोती। जगमती सांगवान, क्या कहीं ना कहीं उम्मीद है या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है, ये सिर्फ पॉलिटिकली इट्स बीइंग यूज्ड अहेड ऑफ द इलेक्शंस व्हिच आर ड्यू इन हरियाणा नेक्स्ट ईयर? ये बिल्कुल जो हरियाणा में जो इलेक्शंस है उनकी भी कंसीडरेशन है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल ये इनका एकमात्र तरीका है। और इतने जो किसान हैं मेवात के अंदर वो सब गो पालक हैं और वो मतलब पशु पालक है वो, और वो फार्मिंग कम्युनिटी है, और उनको आए दिन इस तरह से उनके नौजवान लड़के जो हैं उनकी हत्याएं की जा रही है। ये पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है इनकी, और इनसे ये पूछा जाना चाहिए डीपी कौशिक से कि फिरोजपुर झिरका के जो पुलिस के ऑफिसर हैं जिन्होंने उन बच्चों की जान नहीं बचाई, जिन्होंने उन विजिलेंटे को पकड़ा नहीं है, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया है? I want to in the end, I just want to end this on with one short answer from Dr. Singh. Dr. Singh, those policemen who have been accused of just letting these almost dead men, those who were beaten badly by these cow vigilantes, as per the allegations, they were taken to a thana. And from there, they were sent off. That don't bring this on our head, take it back to Rajasthan. So do those officers, do those policemen deserve to wear the uniform, sir? Not at all, Tyagi ji. They deserve to be thrown out of the service by the provision 311 of the Constitution. Summarily, without any formal inquiry, they are a disgrace to the uniform, and also case be registered of professional negligence and they be sent to jail. Dismissal and jail, both punishments should be simultaneous. Lofty ideals, but lowly conduct. Mr. Kaushik, I would like to tell you, these are just lofty ideals and lowly conduct. You have to be cruel to be kind, to give a message. Mr. Kaushik, we are hoping, at least now, your government will wake up, sir, and there will be an example set out of this case. Nobody, even sir, nobody, even if they are criminals, they don't deserve to die without any investigation, without the courts, in fact, judging that they are criminals. Nobody deserves to die the death that these two men, the fate that they have faced. Thank you so much to all my guests for joining me at this moment. In the end, ladies and gentlemen, I very quickly want to bring your attention to one story that we have tracked on NDTV very, very closely right from day one. The Morbi Bridge collapse incident that we have highlighted and taken up here on a big scale in NDTV. Now, shocking details have emerged from this report, which we have accessed on NDTV, of the Morbi Bridge collapse of the SIT, the Special Investigation Team, which was appointed by the state government to look into the lapses. Now, the SIT says that the bridge collapsed because of several lapses in the maintenance and operation of this bridge. In fact, goes on to say that corrosion was found on nearly half of the wires on which the bridge was hanging, and also wielding of old suspenders with the new one led to the collapse of this suspension bridge. Remember, in Morbi, 135 people died, 27 wires were allegedly broken before even the cable snapped. That was the condition of this bridge. Also, ladies and gentlemen, Oreva Group, the Ajanta Manufacturing Limited Oreva Group, which was given the responsibility for maintenance of this bridge, there were lapses in even awarding the tender, and that resulted in the death of those unfortunate 135 people. Callous, complete negligence, and it's many people, and you'll go to, in fact, Morbi, they will tell you it is not an accident, but murder of 135
innocent people. That's all the time that we have in this edition of Breaking Views. We are hoping that stricter punishment in this case is also met to all those responsible, the real responsible people like Oreba Group Chairman Jaisukh Patel. Thank you so much for tuning in. Good night. News and updates continue on NDTV.